Good morning, students. The topic that we are going to see today is financial planning and its importance. So what do you understand by financial planning? Financial planning is nothing but a financial blueprint of organization's future's operation. In future, whatever the fund requirement may arise, either to meet its short-term objectives or long-term objectives, that is done by the financial planning. So financial planning is nothing but matching of two important things. That is, first is requirement of the fund and second is availability of the fund. मेन काम फाइनेंशियल प्लानिंग का क्या है, ये देखना कि जब भी फंड फर्म को किसी भी तरह की कैश या फंडिंग की जरूरत हो, क्या वो टाइम पे अवेलेबल होगा या नहीं. Thus, the main objective of financial planning is to have a match between the requirement of the fund and availability of the fund at the right time. Now, why this matching is required? If a firm is having shortage of the fund, then what will happen? It won't be able to meet its future commitment. अगर कोई भी फ्यूचर में इनको लग रहा है कि कोई एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी उनके पास है, लेकिन अगर उनके पास शॉर्टेज ऑफ फंड होगी तो वो उस इन्वेस्टमेंट को फंड नहीं कर पाएगी. At the same time, whenever the firm is having excess or surplus fund with them, what will happen? It will lead to unnecessary expenditure. अगर हम हमारी बात करें, जब भी हमारे पास कभी बहुत ज्यादा कैश आ जाता है तो हम अननेसेसरी खर्चे करने लग जाते हैं. सिमिलर थिंग कैन टेक प्लेस विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो. सो फाइनेंशियल प्लानिंग का काम क्या है? द मेन टास्क ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इज टू सी दैट ना ही फर्म के पास इनफ फंड हो, ना ही फर्म के पास शॉर्टेज ऑफ फंड हो. जब भी जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ फंडिंग फर्म को चाहिए वो सही समय पे अवेलेबल हो जाए. नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल प्लानिंग. Now, what do you understand by financial management? Financial management is nothing but whenever any best investment opportunities and alternatives are available before the firm, to choose the best investment opportunities so that it will lead to increase in the shareholders' wealth. तो main task या main aim क्या होता है financial management का? The main aim is to see that shareholders' wealth is increased. As far as the financial planning are concerned, to see that there is a smooth operation और डे टू डे एक्टिविटीज एकदम ठीक तरह से चल रहे हैं या नहीं, कहीं पे भी कैश के वजह से काम में रुकावट ना आए, दैट इज द मेन टास्क डन बाय द फाइनेंशियल प्लानिंग. सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल प्लानिंग बोथ आर डिफरेंट. फाइनेंशियल मैनेजमेंट लीड द मेन टास्क और मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट is shareholders' wealth, whereas the main objective of financial planning is the short-term availability of the fund. Now, there are two main objectives that are being achieved by the financial planning. First is to ensure availability of fund whenever required. जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, the fund may be required for longer or shorter period of time. जैसे longer period में हो सकता है कि वो सोच रहे हैं कि दे वांट टू परचेज एनी एसेट्स और दे वांट टू डू इन्वेस्टमेंट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो उसके लिए कैश की रिक्वायरमेंट होती है. सिमिलरली अगर हम शॉर्टर पीरियड में देखें तो हो सकता है कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए फंड की जरूरत हो. तो फाइनेंशियल प्लानिंग का मेन काम क्या है कि जब भी जो भी पर्पज के लिए वेदर लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म है, दी फंड इज इजिली एंड रेडिली अवेलेबल. द सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज टू सी दैट द फर्म डज नॉट रेज अननेसेसरी resources. To see that firm does not raise resource unnecessarily. जैसे we have seen कि अगर जैसे excess funding, shortage of funding is not good for the firm. Similarly, excess funding is also not good for the fund. So here the firm has to see that optimal use of resources or funds are made by the firm. So these are the two main objectives of the financial planning. Thus, the process of estimating fund requirement and specifying the sources of fund is called financial planning. So this a definition is nothing but it is giving you some basic features of financial planning. So the main feature of financial planning is include both long term as well as short term plannings. जब भी आप प्लानिंग 3 to 5 years के लिए करते हो, usually the financial plannings are done for this period of time, so they are termed as long term planning. And whenever any financial planning is being made for 1 year or less than that, it is termed as बजट. तो जो शॉर्ट टर्म प्लानिंग होते हैं उसे आप बजट कहते हैं. सो यूजुअली आपका ये जो भी फाइनेंशियल प्लानिंग है, इट यूजुअली स्टार्ट्स विद द सेल्स फोरकास्ट. नाउ व्हाट हैपेंस इन दिस, हाउ द प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग बिगिंस. यूजुअली इट स्टार्ट्स विद द प्रिपरेशन ऑफ योर सेल्स फोरकास्ट. यहाँ पे क्या करती है कंपनी, यूजुअली सपोज नेक्स्ट 5 years के लिए क्या करती है कंपनी, फाइनेंशियल प्लान बनाएगी.
It will first try to estimate what would be the probable sales likely to happen in the next 5 years. जितना सेल होगा उसके बेस पे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करती है, कंसीडरिंग ऑल दी टैक्स एस्पेक्ट्स, डेप्रिसिएशन एस्पेक्ट्स, जो भी एक्सपेंसेस हो सकते हैं, जो भी इनकम जनरेट हो सकती है, उसके हिसाब से फर्म रफली एक प्रेडिक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है. After preparing the financial statement, then they just try to find out what would be the expected profit during the year, so that they can have an idea कि internally फर्म के पास कितना कैश अवेलेबल होगा. डिविडेंड पे आउट करने के बाद what would be the retain earning that would be seen by the firm. रिटेन अर्निंग करने के बावजूद अगर कंपनी को किसी भी कोई ज्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट के फंड की रिक्वायरमेंट होगी, देन इट विल ट्राई टू सी कि व्हाट आर दी एक्सटर्नल सोर्सेज अवेलेबल. तो ये पूरा प्रोसेस होता है एंड देन ऑन दैट बेसिस वेरियस कैश बजट्स विल बी प्रिपेयर्ड. सो दिस इज हाउ द फाइनेंशियल प्लानिंग विल बी डन. So what are the importance of financial planning? As we have seen, the very first advantage is it helps in forecasting what would happen, what is likely to happen in future under different business situation. यानी अगर boom period होगा तो what would be the financial planning या what would be the availability of the firm in the availability of fund in the firm. Similarly अगर recession period होगा तो क्या फर्म के पास इतना इनफ कैश अवेलेबल होगा कि नहीं कि वो एटलीस्ट उनकी बेसिक डेली रिक्वायरमेंट्स को मीट कर सके. सो इट इज जस्ट हेल्पिंग इन फोरकास्टिंग. सिमिलरली इट अवॉइड बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस. कभी अचानक से कोई बिजनेस शॉक आ गया या कोई अचानक से अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट आ गया तो वो किस तरह से एफिशिएंट कैश मैनेजमेंट कर सकती है. दैट इज द मेन टास्क ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग. इट ट्राइज टू कोऑर्डिनेट वेरियस बिजनेस फंक्शन. जैसे डिपार्टमेंट में फाइनेंस फंक्शन के अलावा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, सेल्स डिपार्टमेंट होता है, उनको भी कैश की रिक्वायरमेंट होती है. जैसे प्रोडक्शन फंक्शन का काम क्या है, प्रोडक्शन कंटिन्यू रहे और कभी भी उनको कैश के वजह से प्रोडक्शन बंद ना करना पड़े, ठीक है, अनअवेलेबिलिटी ऑफ कैश के वजह से. सिमिलरली सेल्स फंक्शन का क्या है, जैसे मार्केटिंग करना है, एडवर्टाइजिंग करना है, तो उसके लिए उनको कैश की रिक्वायरमेंट है. तो जो भी अलग फाइनेंस फंक्शन को छोड़ के जो भी डिफरेंट फंक्शंस होते हैं मेन, उनको कोऑर्डिनेट करने का काम है ये फाइनेंशियल प्लानिंग का काम है. Then is link the present with the future. Since financial planning is being made for the future, keeping in mind the present scenario that is prevailing in the organization. So it is providing a link between the present and the future. And it also provides a link between the investing and financing decision. जैसे मैंने कहा कि कोई भी अगर फ्यूचर में लॉन्ग टर्म कोई इन्वेस्टमेंट आप करने वाले हो, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी फर्म के सामने अवेलेबल है एंड किस तरह से वो उसका फंडिंग करने वाला है, वेदर इट इज गोइंग टू गो फॉर internal source of fund or external source of fund, that is also taken care of by the financial planning. So that's all for today. Thank you.